Assalamu alaikum wa rahmatullah. And luckily we're back with this all important cricket match. Friends Motors Narbal taking on Mariya Cricket Club. Toss won by Friends Motors Cricket Club and their captain deciding to bat first. And we will definitely love to pray to mighty Lord this man stays patient out there in the middle, because he doesn't possess those patience, and we definitely love to throw it out that he might stay patient for next few overs at least to study the ship and to give the side a kind of a fly they need badly at the start of the innings. Ishnaq and his colleague Imtiaz lefty out to the Suntan Khalif Rabada will open the attack. It's going to be Latif Ryder to open the attack for Mariya Cricket Club in this all important cricket match. There is a wicket keeper, then there is first slip, there is a Raja Salim fielding, then there is backward a point in place, cover point, short extra cover, and it's believed to be this man is possessing a lot of pace, and he will definitely possess a kind of a threat with that pace, and he spits in that fire and venom. And let's find it out. Shah Tanbir writes in, Walaikum Salam brother, the first waiver. Then we got Ashik Ahmed and Saklan Mushtaq. Thanks all the buddies for your love and support. Ball one is here, and Sangbaz, then Iqbal Butt, Ishtiyaq Rasool on strike. We'll have to wait and watch how he's going to execute his plans to perfection. Ball one in grand finale. In comes Ryder. The very first ball outside off. Umpire signals it's a wide. It's one for none in over number one. They're underway with that extra run. And again, McCleek next to me in the com box. As before, I will hand over my microphone. I would definitely love to throw it out again. This man is going to be the big fish, and he need to stick to the basics and try to execute his plans. Next ball. Oh, that one flies over backward a point. Phil gives the chase, but to no avail. First boundary of the blade of Ishtiyaq Rasool. He's underway with that wonderful shot over backward a point. He's off the mark. So is Mariya Cricket Club. They're 5 for none in over number one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और निर्णायक फाइनल मुकाबला हांजुल प्रीमियर लीग 17-3 वर्ष 2022 के अंतर्गत फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है। इश्नाक सामना करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि तिरछे बल्ले के साथ खेला जरूर, सीधे वहां पर खलीफ के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। तो पहली पारी शुरू हो चुकी है, पहला ओवर प्रगति पर, और ऐसे में 5 रन बने हैं बगैर नुकसान के। फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल और मारिया क्रिकेट क्लब के विरुद्ध ये अंतिम भिड़ंत। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार ये गेंद, इस बार फिर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद सटीक लाइन और लेंथ के साथ, हालांकि अच्छी खासी उछाल वहां पर मिलती हुई इश्नाक ने प्रयास जरूर किया था स्ट्रोक लेने का, लेकिन सफलता मिली नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। तो एक बेहतरीन मुकाबला, और ऐसे में शुरुआती क्षण, इस मुकाबले के शुरुआती क्षणों में किस प्रकार से चुनौती को स्वीकार करेंगे दोनों बल्लेबाज, देखने वाली बात होगी। इस बार अच्छी गेंद स्टंप पे अंतिम समय में उसको दिशा दे दी, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका जस्ट बोखारा आता हुआ यहां पे इश्नाक के बल्ले से, और खुल चौका पहुंचा दिया 9, उनका व्यक्तिगत योग 8, और फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम अब तक 9 रन बना चुकी है पहले ओवर में बगैर नुकसान के। बेहतरीन वातावरण, अच्छी खासी धूप खिली हुई, अच्छे खासे दर्शकों की संख्या इस फाइनल निर्णायक मुकाबले का आनंद लेने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला, और आशा की जा रही है क्रिकेट के सभी समर्थक इस मुकाबले का काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः प्रतीक्षा समाप्त, और पहला ओवर इस समय बीच मैदान में 9 रन बगैर नुकसान के। इम्तियाज लेफ्टी जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है, और इश्नाक इस समय सामना कर रहे हैं ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और अंपायर का इशारा वाइड का अतिरिक्त के साथ स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10 पे पहुंच चुका है फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम का स्कोर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। बट सजाद मुदस्सिर शाह भी इस मुकाबले का आनंद है। राइजिंग स्टार अजहर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। संघर्षपूर्ण आकर्षक मुकाबला, शुरुआती क्षण, और ऐसे में बेहतरीन मुकाबले की आशंका। हालांकि ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप का इस्तेमाल किया, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, और इश्तियाक रसूल के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौका, और कुल योग 14 पहुंच चुका है पहले ओवर में। खर्चीला ओवर शुरुआती क्षणों में
शेख वसू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद शेख भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। मोहम्मद आदिल और राइजिंग स्टार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। संघर्षपूर्ण मुकाबला, शुरुआती क्षण है मुकाबले के और ऐसे में प्रतीक्षा की जा रही है कि एक बड़ा मुकाबला देखने को मिले, भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक कांटे की टक्कर का मुकाबला। अगर मारिया क्रिकेट क्लब के टीम की बात करें तो एक से बढ़कर एक दिग्गज तारे उनकी टीम में खेल रहे हैं इस बार। अच्छे बैकफुट पर जाकर के मिडल स्टंप पे आते हुए गेंद को खेला, वही पास में पंजू के बल चलते हुए, हालांकि गेंद को बल्ले से सिर्फ टकराने भर दिया, वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन का। पहला ओवर समाप्त, 14 रन बगैर नुकसान के। इम्तियाज लेफ्टी को अभी अपना खाता खोलना है। और इश्तियाक रसूल की अगर बात करें, 6 गेंदों से 12 रन, 3 चौके उनकी पारी में। और आमतौर पर इस प्रकार की शुरुआत आमतौर पर देखा गया है, उनके बल्ले से शुरुआती क्षणों में तेज तरार खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज स्थान अलग, मुकाबला अलग, विपक्षी टीम अलग, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ शुरुआती क्षणों में कुछ समय बिताना होगा विकेट पे और उसके बाद 10 स्ट्रोक्स लेने होंगे। So 14 for the loss of no wicket after the completion of over number 1, and Ishtiaq Rasool is on to 12 off 6 balls, and this is how he plays. This is his natural game and his trademark. And if we look at Imtiaz lefty, he is yet to open his account. First over faced by Ishtiaq Rasool, and he used all the 6 balls to be precise, and he fetching 12 off his blade and 2 in the form of extras. Total 14 for none after the completion of over number 1. Hanzul Premier League edition 3rd grand finale coming your way from the sets of JK Sports Time. This is the sports field of Hanzul, and Sidra Sajjad Bhatt in cricket atmosphere is awesome, no doubt about that. It's wonderful atmosphere, picturesque scenes around the park, beautiful sunshine, beautified one. Mohammad Arif, then Bashir Malik, Sajjad Ahmed, Ashik Ahmed and Sidra again. That one stands tall, punches that one, but unable to pure escape on offside. No run, the ball ricocheting and rebounded down towards the mid-off, and no run. It's a dot ball, 14 for none in number 2. 1.1 ball done. Sidra Sajjad, then Sophie Yasir, Majid Baba and Bat Harun. Well, Sophie writes in about yesterday match, we can't talk about that. Oh, that's a biggie. That is an excellent shot, up and over, long off for 6 more. And that half a dozen brought to by just to Bukhara, but just lifting that one up. What a shot, executing his plans to perfection. And this is how you can go up to the pacers and you can go up to the bowling. And that's a wonderful hit again, as the likes of Munir Bhatt, the experienced and the seasonal campaigner, is operating. But look at Imtiaz lefty again, stepping too much leg side. There is no need to play such kind of shot, Nazir. You hitting the prior to this one, you hitting the ball over long off, then all of a sudden there is no need to create such kind of ready-made room which isn't available, to be precise. Oh, look at that one, that's a beauty. That's what Munir Bhatt possessed for all of us in its kitty. That's a beauty on that occasion, and the batter just manages to keep it out towards the slip corner area for no run. It's a dot ball, 20 for none in over number 2. Bashir, destination Alop, and Ejaz and Adil down the leg side. Goes for the sweep. We'll have to wait and watch. The two batters are fetching a single out of it. Leg by signal, 1 more run added. 21 for none in over number 2. We got Mudassir Sheikh, we got Sahil Nizar, we got Destination Alop, Majid Baba and Destination Alop. It's 21 for none, and this broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Pamper, and MHM multi-brand fashion store, Agri Clan Magam. With slip in place, Munir Bhatt continues, and Ishnaq is in trouble for a while. He was in trouble, but the ball dropping short of the fielder there at wide-ish long on area, allowing him to fetch that run, and his off strike overcomes, so he will keep the strike for the next 2 done. It's 22 for none. There's a not bad start, up to flyer. That's what they wanted, and they got that. But now the responsibility is laid on the shoulders of the two batters. They need to stick to the basics and try to bat out next 4 or 5 overs. Then they can give license to the middle and down the other batters to go for the full monty, and they can do whatever they want to do on a cricketing field on a given day. But what matters at this crucial juncture is to keep wickets intact.
बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि शुरुआती क्षण काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। बड़ा मुकाबला है, दबाव की स्थिति दोनों ओर से है और दोनों टीमों की तुलनात्मक तौर पर बात करें तो एक कांटे की टक्कर का मुकाबला है क्योंकि विपक्षी टीम में राजा सलीम, राजा मुनीर भाट, बिलाल पांड्या एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं। तो ऐसे में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। शुरुआती क्षण काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और शुरुआती क्षणों में अगर आप 4-5 ओवर सहजता के साथ, संयम के साथ, भले ही स्कोरबोर्ड पे कम रन बने लेकिन विकेट को सुरक्षित रखते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो हो सकती है। शेरुशिराज, सोफी आकिब खाक सर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बशीर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से। इम्तियाज लेफ्टी 5 गेंदों से 6, इश्ताक रसूल 7 गेंदों से 13, जिया बशीर, सोफी हमारे साथ बने हुए हैं। महराज के साथ जीएम राथर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर उस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पे सबसे परिवर्तन किया जा रहा है और खलीफ को लगाया गया है रबाडा के नाम से लोकप्रिय। और देखना है एक तेज गेंदबाज इन परिस्थितियों में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद, दोबारा 6 गेंद, बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से वहां पर मजबूर किया बल्लेबाज इशनाक को बैक पर जाकर के रक्षात्मक रूप से रोकने के और निश्चित तौर पे अच्छी गेंदबाजी शुरुआती क्षण में इस प्रकार की गेंदबाजी। और यही इस समय आवश्यकता है कि सटीक लाइन और लन के साथ आप गेंदबाजी करें, अपनी दिशा और लंबाई में नियंत्रण करें। भले ही आपके पास रफ्तार अच्छी खासी, लेकिन रफ्तार का बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना होगा। 2.122 बगैर नुकसान के फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट नाक के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर करारा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। ये लगा जस्ट बुखारा छक्का और इस छक्के के साथ ही इशनाक के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और कुल मिलाकर 28 पे पहुंचा दिया। 2.2 के बाद फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल का स्कोर। टॉस जीतने के बाद निर्णायक फाइनल मुकाबला हांजुल प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 और ऐसे में फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के विरुद्ध इसमें एक बेहतरीन बल्लेबाजी। हालांकि विपक्षी टीम की अगर बात करें मारिया क्रिकेट क्लब, उनके पास भी एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी है। बिलाल पांड्या की बात करें, राजा सलीम की बात करें, राजा मुनीर भाट और ऐसे में आसिम बशीर उनकी टीम में खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का मुकाबला और निश्चित तौर पर क्रिकेट के समर्थकों का मानना है कि भले ही परिणाम कुछ भी हो लेकिन मुकाबला संघर्षपूर्ण देखने को मिले। 28 2.2 तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है। इमस्टार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर खलीफ ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, हालांकि हवा में कुछ देर रहने के बाद इस गेंद को लपकना आसान नहीं रहता लेकिन प्रयास जरूर किया था। गेंद उनके सामने 4-5 कदम आगे गिरी और अब फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 2.3 28 बगैर नुकसान के 10 गेंदों से 19। इश्तियाक रसूल इशनाक के नाम से लोकप्रिय और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी की बात करें 5 गेंदों से 6 रन बनाकर नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे और गेंदबाजी का दायित्व मारिया क्रिकेट क्लब की ओर से खलीफ रबाडा के पास। शुरुआती क्षणों में एक विकेट की आवश्यकता, शुरुआती क्षणों में साझेदारी को तोड़ने की आवश्यकता, क्या उसमें सफल हो पाते हैं गेंदबाज तो नहीं देखने वाली बात होगी। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लपेटा हुआ स्ट्रोक, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका इशनाक के बल्ले से, उनके बल्ले से ये चौथा चौका। एक छक्का भी लग चुका है अब तक उनके पारी में और उनका व्यक्तिगत योग 23 पे पहुंचा है 11 गेंदों से। कुल योग 32 पहुंचा दिया 2.4 के बाद। तेज तरार, आकर्षक और आमतौर पर जिस शैली के बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हैं मुनव्वर। Of course, he's trying to set things ablaze, but we would definitely love to see, and all the viewers would definitely love to see this man bat out till next 5-6 overs, and that can really bring about the fireworks, and it will be raining 6s and 4s here at the Sun. And Sheikh Wasu writes in, thanks brother for your love and support, Cock sir. 32 for none, and Ishnag is on to 23 of 11 balls. Khalif again, another good ball. Now nothing wrong with the ball, that was a good delivery, but Ishnag playing it onto the onside and escapes for a quick single. And this is sensible cricket, this is called sensible cricket. Hitting the ball to the boundary, then next ball all of a sudden working it onto the onside with gently onto the onside and escapes for a quick single. And this is how you need to keep the scoreboard ticking and keep the strike rotating each and every ball. And my writes in, walaikum salam brother, 33 for none in over number 3. It's 2.5 balls done and dusted. Raja Salim at first slip. In comes again Rabada in the air. Will this be a catch? No, it doesn't. It's way away from the fielder into the back clear, a fine boundary for 4. Yet another 4. Mushtaq Ahmed writes in, will you attend the marriage ceremony of your cousin today? Mushtaq, absolutely right. He's going to leave the Santa in after the completion of inning number 1. Home decorations. Then we got Gul Mohammed sir, thanks for your love. Ijaz Hussain, Guru and Khan Asal and Wasim Butt. With that boundary, with that just Bukhara 4, score moves on to 37 for none after 3 overs. And it tells you the entire story
how terrific, how destructive this pair is, and this is going to be in near future to be precise. And Mari, for your love, thanks a lot. And in the meantime, Adil Ahmed home decorations, and then but Zaid writes in something, and we got Bashir Ahmed there. 37 for none, 3 overs, and so far it's all about Ishnaq and Imtiaz lefty. Both are taking full toll of each and every good and bad ball. They're putting it away in style, but this man knows only one thing: the fireworks and how to set things ablaze on a given day. No one knows better than this man. He's having a lot of knowledge of how to keep things on a high and how to go after the paces. He knows very well, but he need to understand that he's going to be a big man for his side, because if this man tend to bat out till next 5-6 overs, I believe that Friends Motors can really possess a big score, and they can pile up in excess of 200 and even beyond that. They can imagine and they can think beyond that. It's 37 for none after 3 overs. Fresh, oh, what a delivery, beauty, absolute ripper of a delivery, and scaring him up. But luckily ball didn't found an edge. This is how you can keep this man under check. And whenever it's whenever we talk of the defensive cricket, and he's unable to play that second fiddle kind of a cricket, he knows only one thing: how to go after each and every ball. Next ball comes in and bowls. Oh, that one fly. Oh, there's a chance. But chance gone bagging, and that's just Bukhara 6 of that ball, flat batted, and they were back at a point. 6 more, 43 for none, and Ishnaq all of a sudden moves to 30 or 14 balls, and this man is taking bowlers to the cleaners, and that was a freebie. That was a bad line to persist, and that isn't the need of an hour. You have to hit the right areas. You need to hit the right lines and lengths. But this one was seriously asking for trouble, and so does the batsman standing tall onto that one. 43 for none. Friends Motors up to flyer. Next ball, another one. Will this be? No, Tarzan. Another one finds the fence in style, but this is class, this is sheer balance. Thank you, Azhar Sultan Butt, and with that boundary, score moves on to 47, and he moves to 34 of just 15 balls. Another just Bukhara through long up this time. Bowlers can't do very much, because these two batters know only one thing: how to set things ablaze, how to go after the paces. But I definitely pray to Mighty Lord, this man understand his role. As a big man for his side, he need to understand his role, how he need to play. Oh, look at that one. Today he has understood quite a lot how to deal with certain circumstances. To some extent, I can see few glimpses of this man. The way he tends to go right behind the ball, covering the line of the ball, that swing of the ball, and then playing the shots. This is something special coming out of this person who knows only one thing: how to go up to each and every ball. Next ball. Oh, that flies off that outside edge. This could have been a chance, but another just Bukhara coming through third man area. This is just Bukhara 4 coming, and with that boundary, Friends Motors Narble crossed the 50-run mark, the 51 to be precise, for the loss of no wicket. This is how they are going after Mariya Cricket Club. The defending champions are under the serious pump and pressure at this crucial juncture. 3.5 51 38 पे नाबाद 17 गेंदों से इश्नाक, और आप कल्पना कर सकते हैं क्या तेज तरह पारी इस समय बीच मैदान में चलते हैं। ये गेंदा के लिए इस बार फिर हल्का के तिरछे बल्ले से जरूर निकाला था, उस और खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा, 4 ओवर की समाप्ति 51 बगैर नुकसान के। फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हैं, और क्या बेहतरीन आकर्षक वातावरण, तेज तरह शुरुआत। 4 ओवर और 51 रन बन चुके हैं अब तक। अगर इस मुकाबले की बात करें, 4 ओवर में 51, इश्तियाक रसूल 38 और इम्तियाज लेफ्टी जो है इस समय 10 पे नाबाद हैं 6 गेंदों से। और इन परिस्थितियों में शुरुआती क्षण में एक आकर्षक मुकाबला, और आप विजुअल्स देख सकते हैं इस मैदान के। बहुत बड़ा मैदान, आकर्षक खूबसूरत मैदान, और यहाँ पे एक बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। एक आकर्षक पारी समय दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों द्वारा। इन परिस्थितियों में कहना चाहिए कि क्या लाजवाब वातावरण है। फाइनल मुकाबला हांजुल प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत, और सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक बने हुए, और आप विजुअल्स देख सकते हैं इस मैदान के। हालांकि दर्शकों की अच्छी खासी संख्या
धीरे धीरे से जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा और आशा की जा रही है कि एक अच्छी खासी संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए यहाँ मैदान में पहुंचे। और ये है, अगर इस मैदान के चारों ओर दिशाएं देखें, स्थान देखें तो खूबसूरत मैदान। और ऐसे में हमारे साथ हमारे व्यूवर्स लगातार बने हुए हैं। बिग शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं और उसके बाद राजा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और इन परिस्थितियों में रमीज राजा खाकसार गौहर अहमद के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इश्तियाक रसूल 38-18 गेंदों से, इम्तियाज डेफ्टी 10-6 गेंदों से, बट इरफान और शेख जुबैर फैजान ज़हूर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और इन परिस्थितियों में प्रिंस तहसीन इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। तानिया मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। ताज नगमी और ताहिर खान खाकसार, अरशद मल्ला, आरजे अल्ताफ हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गौहर अहमद इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। गाजी इमो हमारे साथ बने हुए हैं। लोन दालिश भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं और 4 ओवर में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम ने 51 बनाए हैं। अगर इस मुकाबले की बात करें, इस ओवर की बात करें, पिछले ओवर में कुल मिलाकर 2 चौके और 1 छक्का, अब तक 14 रन आ चुके हैं। पिछले ओवर से आकिब हमारे साथ बने हुए हैं चंडीगढ़ से, मोहाली चंडीगढ़ से। और शहरियार शब्बीर हमारे साथ नूराबाद से बने हुए हैं। मोहम्मद इमरान और इट्स आरडी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। हाजी जहीर मिर्जा हमारे साथ बने हुए हैं। गाजी इमो के साथ बख्शी, मुश्ताक लाला, शाहिद उबैद, अब्दुल मजीद के साथ शिराज, शेरू शिराज भी, हैदर कयूम के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बशीर अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। अरशद इकबाल डार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप डिजिटल स्टार के जरिए हमें संबंधित कर सकते हैं। मुसव्वर महराज, ताहिर मकबूल, बांडे तस्वर और मोहम्मद अली के साथ यावर गुलजार भी हमारे साथ जोधपुर से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। डार शोएब और कटोच भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। सोल्जर ऑफ अल्लाह वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक अहमद, एन मुश्ताक, माजिद बाबा, इट्स फैजुर रातर, तनवीर खान, इरशाद अहमद नजार और इमरान नबी के साथ आबिद हुसैन और मोहम्मद यासीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स का, बने रहिए हमारे साथ। आकिब भी हमारे साथ, हिसार मीर, बख्शी और जुबैर अहमद मंसूर पट के साथ लोन आमिर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूवर्स का। और ऐसे में एक बेहतरीन मुकाबला इस समय बीच मैदान में। राइडर लतीफ इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, काफी खर्चीले साबित हुए। 28 रन दिए, उन्होंने कोई सफलता उनको नहीं मिली। और वहीं पे अगर इम्तियाज लेफ्टी की बात करें, 6 गेंदों से 10 रन, लेकिन इश्तियाक रसूल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 18 गेंदों से 38 रन बनाए हैं। बट इरफान, इरन खालिद, मोमिन बशीर हमारे साथ बने हुए हैं। और मंजूर भट्ट इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। रेशी इजाज, बहुत बहुत धन्यवाद इजाज भाई। डार गुलजार, यासीन भट्ट, तारिक, एडी यादव और इट्स आरडी शेख इम्तियाज के साथ इस मुकाबले का आनंद। तहसीन भी हमारे साथ बने, धन्यवाद तहसीन भाई। और शेख आमिर के साथ मीर शमीम, इशफाक अहमद गनाई, खाकसार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, खाकसार हमारे ये अलाउ नहीं है, आपकी बात हम तक पहुंच गई, लेकिन फरोज शम्स, एस अली रिजवी, लोन जूबी, दानिशुल इस्लाम और फुरकान भी जुबैर मुश्ताक के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बशीर अहमद बशीर और हमारे साथ बने हुए हैं। एजाज शेख भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, जहांगीर लोन इस मुकाबले में खेल रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी, इशनाग और एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी अगर फ्रेंड्स मोटर नारबल की टीम की बात करें। और वहीं पे मारिया क्रिकेट क्लब की बात करें तो आसिम बशीर खेल रहे हैं, मुनीर भट्ट खेल रहे हैं, राजा सलीम, राजा मुनीर। तो एक से बढ़कर एक जोड़ी है। निश्चित तौर पर कुछ बड़े सितारे, और क्रिकेट की भाषा में बात करें तो दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। और ऐसे में निश्चित तौर पर एक से बढ़कर एक सितारे इस मुकाबले में खेल रहे हैं। जो चयन करता उन्हें चयन किया है, तो निश्चित तौर पर आप समझ ही पाए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ी टीम निश्चित तौर पे होगी जो इस समय बीच मैदान में भिड़ंत कर रही है। Well, so dear beloved viewers, don't go anywhere, don't fade away. Short pause in the game because few of the officers are having a word with the players there. So play halt for quite some time and we shall be back. So don't worry, so don't go anywhere, stay this way and hop tab is JK Sports Time Way, and you will find out the fizzle at Kampan between the two gants of cricket here at the center of Hanzul. This is 3rd edition coming to you live and exclusive. Tanya Malik writes in,
Tani Malik, and for your kind information, it isn't easy, and staying back home, and for you it can be a cup of tea, but it isn't everyone's cup of tea. It will take you ages to learn to be precise, and we are having issues with the valley-based people. We can't hold anyone's nerve, and each one's nerve is quite hard because Kashmiris are quite difficult to handle, to be precise. It is 51 after 4 overs, and we're going to be in over number 5. 4 overs done. First passage of play, to be precise. First passage belongs to the thank you Lonzubi for Alliance Sport. First passage of 4 overs, it clearly belongs to the session, and 4 overs clearly belonging to this side, Friends Motors now, but they were really on top, and Tanvir Pandit wants to know what happened. A short pause, officers having a word, and Aqib Ahmed writes in, thank you brother for your love, and Zubair Mushtaq writes in, nothing happened. It's again as a run of play. A few officers arrived belatedly, to be precise, and they reached here, and we have to welcome them. So we can't do very much regarding that, but don't worry, don't go anywhere, don't fade away, come back. We have a game on here at the center. This is the grand finale coming your way, and I personally believe that you will definitely love to hop tabs this way and find out the fizzle at Campan, and this is what you would definitely love to see coming your way this afternoon. So we are hopefully back again after the short pause. The play resumes here at the center, so don't go anywhere, don't fade away, come back and let's join the party. It's going to be a terrific game of cricket which really awaits us, and we're on the way in style, and we would definitely love to see how these two batters are going to play in the next coming overs. Is it okay now? Is it? Now it is okay, it's in place. So 51 for none after 4 overs. The passage of 4 overs, it's been all about Friends Motors Narbal, Ishtiyaq Rasool and Imtiaz Lepti going for the full mountain, going for the kill time and again. Each and every ball flying out of the park. Nazir, your comments, how are you going to exhibit this and how are you going to explain to our beloved viewers and proud viewers on JK Sports Time? देखिए इस समय 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 51 रन बना लिए हैं फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम ने, और जिस प्रकार से शुरुआती क्षण काफी महत्वपूर्ण रहते हैं बड़े मुकाबले में, उसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया है दोनों बल्लेबाजों ने, चाहे इम्तियाज लेफ्टी हो चाहे इश्तियाक रसूल हो। 18 गेंदों से 38 रन बनाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और निश्चित तौर पर जिस शैली के बल्लेबाज हैं उस शैली के अनुरूप बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हैं। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और अंतराल के बाद एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ 5वां ओवर लेकर के तैयार उस छोर से, और मुनीर भट्ट समझते अभ्यास कर रहे हैं, शायद वे गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे इन परिस्थितियों में। और शुरुआती क्षण काफी महत्वपूर्ण, इश्तियाक और इम्तियाज लेफ्टी के कंधों पे काफी कुछ दायित्व होगा, निर्भर करेगा इस जोड़ी पे कि शुरुआती क्षणों में एक ठोस, विश्वसनीय और एक मजबूत आधारशिला अपनी टीम को दे, ताकि फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सके। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, प्रयास कर रहे थे कट के अंदाज में, सफलता मिली नहीं और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 4.1 ओवर की गेंदबाजी, 51 बगैर नुकसान के। मुनीर भट्ट हैं गेंदबाज, इम्तियाज लेफ्टी के लिए फ्लाइट और इस बार हवाई यात्रा पे भेजा उस और खिलाड़ी, एक टिप्पा खाने के बाद, हालांकि प्रयास उन्होंने किया था लेकिन सफलता मिली नहीं। 1 रन और खाते में जुड़ेगा, और 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़ता हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल का 52 पे पहुंच चुका है 4.2 के बाद। मुनीर भट्ट 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 8 रन खर्चे हैं, कोई सफलता उन्हें मिली नहीं है, और ऐसे में प्रयास कर रहे हैं, जूझ रहे हैं गेंदबाज, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, और ऐसे में यहां से वो प्रयास कर रहे हैं कि शुरुआती क्षणों में एक सफलता मिल जाए, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए। धन्यवाद क्रिकेट टाइकन्स और लोन सूबी भी राफिद रहमान के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मुनीर भट्ट की गेंद, अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे आते हुए बैकफुट जाकर के उसको तिरछे बल्ले के साथ स्ट्रोक जरूर लिया था, लेकिन गेंद सीधे पहुंचे आसिम बशीर के पास, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया, थ्रो किया बगैर किसी रन के। 4.3 52 बगैर नुकसान के। 19 गेंदों से 38 इश्तियाक रसूल और इम्तियाज लेफ्टी 11। अगली गेंद और नाग ने उठा दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। ये लगा जस्ट बोखार छक्का, और इस छक्के के साथ ही 58 पे पहुंचा दिया 4.4 के बाद।
बगैर नुकसान के तेज तरार ताबड़तोड़ शुरुआत, और जिस शैली के बल्लेबाज है दोनों बल्लेबाज उसी मुद्रा में बल्लेबाजी करते हैं, चाहे इशनाक हो चाहे इम्तियाज लेफ्टी हो, लेकिन आज प्रभावित किया है इश्तियाक रसूल ने, और जिस शैली के बल्लेबाज उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी कर रहे हैं। फैरोज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकिब अहमद, पर फारूक, वालेकुम अस्सलाम। ऑप्शन से बाहर, जी हाँ, एक और छक्का सीमा रेखा से बाहर, और इस छक्के के साथ ही इशनाक का 50 किस अंदाज से पूरा किया, और 6 रन के साथ ही 21 गेंदों से अर्धशतक ये पारे। 50 रन 21 गेंदों से 6 चौके और 4 छक्के। धन्यवाद स्कोर स्टेशन जहांगीर जॉन हमारे साथ बने हुए हैं और हर आंकड़ा हमें समय समय पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम, और ऐसे में 64 पहुंच चुका है 4.5 के बाद। मुनीर भट्ट नाग के लिए ये गेंद पर फिर ऑफ स्टंप पर, लेकिन क्या शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पर, क्षेत्ररक्षण दौरान निश्चित तौर पे कुछ रन बचाए अपने लिए, अपनी टीम के लिए, और इसके साथ ही ओवर पूरा 5 ओवर की समाप्ति 64 21 गेंदों से 50 इश्तियाक रसूल और इम्तियाज लेफ्टी 8 गेंदों से। यह है मैच समरी फ्रेंड्स मोटर्स नारवल की। अगर हम बात करें मारिया क्रिकेट क्लब के विरुद्ध, मुनव्वर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 64 रन, 1 ओवर बचा है निर्धारक पावर प्ले का, और बेहतरीन प्रयोग कहना चाहिए क्रिकेट की भाषा में, न सिर्फ पावर प्ले का बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकेट को खोया नहीं है यहां से फ्रेंड्स मोटर्स नारवल की टीम ने। After flyer, what a show, what a start, and a prolific start to be precise with the bat, and Ishnaaq fetching 50 out of 22 balls, is on to 50, and that 50 brought to by just Bukhara. Then Imtiaz left to playing the second fiddle, as always, 11 of 8 balls, and this is how he has to play his role, and he has to understand, and he has to take that responsibility. Sahil Nabi Khande, then Sheikh Atif and Maroof Iqbal, and then we got Imstar, the regular viewer, and he writes in that he sends in congratulations to Nag for his richly deserved 50. He's on to 50 of 22 balls, and Asad Bat Imstar, it is 64 for none, and you understand that France Motors Narwal, how packed, how composed their side is, evenly poised side for this all important cricket match. But their batters need to understand, whosoever walks in, they need to take that responsibility, and I believe that 200 is away. JK Sports Time is thankful to Abid Hussain for his love. Thanks. Is 64 for the next ball. Oh, good ball. And Victory onto the onside, and Ishtiaaq Rasool is off and running. And need to be hurry, but he has made it with his Saqib Akon, thanks, and Lon Sartaj, thank you for your love too. And names Dar Akib Ahmed and John Mohammed and Muzammil Nazir, thanks for your love too. And Sheikh Irshad and Arshad Paul and Lon Hassan and Sahil others. 65 for none. Nag on strike again. He's unbeaten on 50 of 22 balls. And this has been the wonderful innings. Lon Sartaj writes in, JK Sports Time, no need bro. Thanks for your love. Lon Sartaj, in comes Lon Norman. The young pacer will be bowling to Ishtiaaq Rasool, and oh, the inner edge, but he will take that nonetheless. Never in control, but up that inner edge, lemon cut, and ball will go down to the fine leg boundary for 4, and that is just Bukhara. And with that 4, score moves on to 69, and that 4 brought to by just Bukhara to be precise. Up the inner edge, and ball goes up the turf and down to the boundary, but never convincing, never in control. And Javed Wani writes in something. Assalamu alaikum salam. Back to sports time. And some spirit, even more energy, thanks for your love. But Azil and friends, oh, that one looked good, and that's done the distance. Just Bukhara 6 coming out of the blade of Ishtiaaq Rasool, lifting that one up, convincing it. What a take, he has picked the bounds out of it and sends it over long off. You can't keep this man under check, under control. And the way Ishnaaq is going up to each and every ball, it tells that it's quite hard to keep this man under check, under control. It is quite difficult to tighten the nose of this man, but he need to display that character. Still wait for the bad balls, and that odd ball to be kept out, and just work on that formula. Keep that odd one out and try that in style. 75 for none. What a start. It's a dream start. And a flyer for France Motors. Next ball from Lone Norman comes in and bows. Pulling that turn, underarm pull comes into play. We'll get a single, and that's it. And we'll have to contend with that single. One more run added, 76 for none in over number 6. And we are ready to put an end to the mandatory power play. We are halfway stage in mandatory power play. It is 76 for the loss of no wicket. And Imtiaz Lefty is on to 12 of 9 balls, but Ishnaaq is on to 61 of 25 balls.
5.476 इम्तियाज लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार। लॉन मोमेन 4 गेंदों से 12 रन खर्च कर चुके हैं। उनका ये पहला ओवर है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लपेटा, उस और खिलाड़ी हवा में रहने के बाद गेंद उनके हालांकि प्रयास उन्होंने किया था सीमा रेखा पर पहुंचकर, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 2 रन और बटोरने के, और 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचा दिया। सबबते 78 5.5 के बाद इम्तियाज लेफ्टी 10 गेंदों से 14, इश्तियाक रसूल 61 25 गेंदों से, और कुल योग 78 पे पहुंचा दिया। 5.5 के बाद पावर प्ले, और आखिरी गेंद पावर प्ले की निर्धारित पावर प्ले एक स्लिप के सहारे। आसिम बशीर है स्लिप में। ये गेंद इस बार फिर उसी दिशा में सीधे हाथ में, इम्तियाज लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, और अंततः लॉन मोमेन ने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर इम्तियाज लेफ्टी को कैच करवा दिया। ओवर पूरा 6 ओवर की समाप्ति, 78 पे पहला विकेट। इम्तियाज लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौटते। 10 गेंदों से 14 रनों का योगदान। हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन इन परिस्थितियों में क्या बेहतरीन तरीके से एक एंड पकड़े रखा, और इशनाक ने बेहतरीन तरीके से विस्फोटक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। Well, Ishnaaq was taking full toll of each and every ball, and they were giving he was also giving time to Ishnaaq. I am talking of this man, Imtiaz left. He was giving more strike and majority of strike back to Ishnaaq, because Nag is going for the full Monty, and today it's been a different day. We were just talking about that. Nag isn't able to put premium on his wicket, and today he has proved his worth again, and he is lifting the morale of his team. Imsdar, thanks for your love. And can you tell me what's the meaning of Just Bukhara? Is a restaurant there in Magam area, and it's it's a wonderful restaurant, to be precise, and you must dine in and take back the sweet memories from Bukhara. And Umar Bukhari is a Bakrian restaurant in Magam. Right, Cinema Bukhari, thank you for your love and support. The way you dropped in a comment to let our proud and beloved viewers know that what Just Bukhara mean exactly. Newman walks to the center after the fall of wicket number 1, and Lone Moment is among the wickets, getting rid of Imtiaz lefty, and that fall of wicket brought to you by Just Bukhara. That was over number 6, and 6 done. It's power play done, 78 for 1. And we're going to be in over number 7, and Ishnaaq is going to face Tugmug Based Star, namely Asim Bashir. And thanks Amos Duff for your love. Our pleasure to throw out and Mir Khalid. Then we got Karar Hussain and Rauf Bashir. Then we got Salek Salamat and Rata Razak. Thanks for your love and support. Thank you, each one of you, every one of you. Thanks a million and billion. And Tar Malik and Rata. First ball. And oh, look at Ishnaaq, flat batted. Past the ball, but straight to long on. Just a run. And he will have to contend with that run. He moves on to 62 of 26 balls. And Frondus Motors a 79 for 1 after 6-point delivery. And Newman walks to the center. Is going to be Nasir Bashir. Nasir Kumar will face Tugmug Based Star Asim Bashir for the first time. It's going to be Asim Bashir to bowl to right-hander batter Nasir Kumar. Nasir Bashir will face Asim Bashir, and it's going to be interesting battle between these two batters, these two cricketers. English commentator Dar Ejaz, myself Munawar Tanveer. You can find me on Facebook through Munawar Speaks. Or the very first ball to Nasir Kumar, and Nasir Kumar with that underarm pull is off the mark in style. With that single score moves on 80 for the loss of 1 in over number 7. We are 2 balls down into the over number 7. Next ball from Asim Bashir to Ishtiaq Rasool, and Ishnaaq goes for the big shot, but beaten all ends a ball hitting him on near the abdominal area. Abdominal cavity to be precise, and no harm done. Score remains 80 for the loss of 1. That's a dot ball, and each and every dot ball is of great importance, and each and every dot ball is gonna create sort of panic. Oh, that one, fetching that one from out of nowhere and into the mid-wicket boundary for 4, and that 4 brought to the Just Bukhara. That's another Just Bukhara into the mid-wicket for 4, and Ishtiaq Rasool is not gonna wait. He's gonna go up to playing 2 defensive shots, and felt irritated all of a sudden, going for that agricultural one, but connects it in the end down to the boundary for 4. With that, boundary score moves on to 84 for 1. Thanks Dar Ejaz for your Ghazi Imu, and then we got Ghazi Imu again, 84 for 1. We are in over number 7. Adil Pir, he writes in Pandit for it will be on 30th of this month. In comes again Asim Bashir to Ishtiaq Rasool. Oh, for the first time, this is compact defensive shot. Who says that he doesn't know how to defend, how to play that defensive shot? Today he has proved, but he need to carry on. Next ball, we'll have to wait and watch. Another good delivery, tempting
And Ishnag again staying patient out there and keeps it out towards the long on. Another run added to the tally. Another feather added to be precise. But this man is showing today different Ishtiyaq Rasool to our proud and beloved viewers on JK Sports Time. What I conveyed a message earlier on to him, please be patient there, and I think he's trying to be patient to some extent. Let me take you through the match summary. So for Friends Motors winning the toss, the 85 for 1 after 7 overs at the cost of 1. Lone Moment picking up 1, conceding 14, and Ryder Latif conceding 28 of 2, and Munir Bhatt conceding 20 of 2. Mo Bukhari writes in, pass my salam to Asim Bashir. Walaikum salam, brother. And Sanek Sohail, and then Yasir Sheikh and Rathar Ejaz, and Dar Ejaz writes in, love your commentary. Thanks, brother Dar Ejaz, for 85 after 7 overs. It's been a wonderful game of cricket. Some fireworks, and batters sometimes dancing to their tunes, but the batters are taking full toll of each and every ball. They're making the ball fly time and again, and it's going to be again Lone Moment, the prolific prospect, the young birdie. He needs to be groomed up a bit, and he can be a prospect for support cricket in the long run. And that's a wide ball, to be precise, way down the leg side. No discipline whatsoever. Need to be disciplined out there with the ball. Need to hit the right areas, right length, and keep the lengths and lengths right, and bowl in that corridor of uncertainty, and keep this man checking time and again, guessing. And if you manage to do so, you can be a happiest man on the park. 86 पे 167 गेंदों से अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के सम्मानजनक रूप से रोका, और इशनाक ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हालांकि खराब गेंदों को सही नसीहत दी, अच्छी गेंदों का सम्मान, सिंगल जबरदस्त स्ट्राइक रोटेट, और बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आज इशनाक इस मुकाबले में। 8वां ओवर प्रगति पर 86 1 विकेट के नुकसान पर 6 कारफ हमारे साथ बने हुए हैं। रातर रजाक इशफाक डार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। लोन मोमेंट है गेंदबाज नाग के लिए। ये गेंद 12 पे स्टंप पर आते हुए गेंद हालांकि सफल करते हैं, उस जगह से मोड़ा गेंद को वहां पर मिसफील्ड करना दिया, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 87 1 विकेट के नुकसान पर 7.2 के बाद 68-32 गेंदों से इश्तियाक रसूल, नासिर बशीर एक गेंद से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद रातर रजाक के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मोमिन अब तक का 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन खारिज कर चुके हैं। एक सफलता जरूर मिली है नासिर बशीर के लिए। चले उनकी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छी गेंद पूरी तरह से चकमा दिया। हालांकि खेला जरूर बल्ले के निचले हिस्से में लगने के बाद वही पास में लुढ़की राजा सलीम ने गेंद को फील्ड किया और पहुंचाया बिलाल के जरिए गेंदबाज तक। कोई रन नहीं। फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल 87 पे 1 के बाद ये 8वां ओवर पारी का चलता हुआ, और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व लोन मोमेंट के पास। नाबाद बल्लेबाज नासिर बशीर सामना करने के लिए तैयार। 1-2 गेंदों से इश्तियाक रसूल 68-32 गेंदों से लोन मोमेंट की गेंद बाहर ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद सरकते हुए ऑफ स्टंप से बाहर के आते हुए गेंद को लपेट दिया सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का निर्देश 6 रनों का, और एक और जस्ट मौका रहा इस बार नासिर बशीर के बल्ले से। उनका व्यक्तिगत योग 7 गेंदों से कुल योग 93 में पहुंचा दिया 7.4 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स मोटर नार्बल की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है। मारिया क्रिकेट क्लब के विरुद्ध हांजुल प्रीमियर लीग सत्र 3 वर्ष 2022 का ये निर्णायक फाइनल मुकाबला, और ऐसे में एक बेहतरीन शुरुआत था अब तक का फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल द्वारा। बल्लेबाजी में लोन मोमिन ये गेंद इस बार फिर पटकने की कोशिश, हालांकि अंदरूनी सिरा लेने के बाद अपने स्ट्रोक से खुश नहीं है नासिर बशीर। गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और पहुंचा दिया बिलाल पांड्या के पास। हालांकि रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये 8वां ओवर प्रगति पर 20 ओवर का निर्धारित कोटा। आखिरी गेंद का आना बाकी 7.5 के बाद। नासिर बशीर सामना कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया 7 पे नाबाद। लोन मोमिन उस चोट से युवा तेज गेंदबाज। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर करारा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये लगा जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके के साथ ही 97 8 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी खासी पोजीशन में इस समय फ्रेंड्स मोटर नार्बल की टीम मात्र 1 विकेट गंवाया है। 97 रन बना चुके हैं और 68 पे नाबाद है। 32 गेंदों से इश्तियाक रसूल। इम्तियाज लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 11 गेंदों से 14 रनों का योगदान दिया। नासिर बशीर नाबाद 11-5 गेंदों से। और ऐसे में अगर गेंदबाजी की बात करें, लोन मोमिन ने 26 रन देकर के 1 विकेट 2 ओवर में 28 रन देकर के कोई सफलता राइडर लतीफ को नहीं, और मुनीर भट्ट ने 2 ओवर में 20 रन खर्चे हैं और उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली है। आकिब अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। रातर रजाक बट फारूक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। खान शफी के साथ नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर
ओवर लेकर के तैयार उस शॉट से। और एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक, निर्णायक फाइनल मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। इश्तियाक रसूल एक बार फिर लगातार उस छोर से आसिम बशीर पे विश्वास जताया है कप्तान ने। एक सफलता की आवश्यकता है, इस साझेदारी को तोड़ना होगा क्योंकि आत्मविश्वास के साथ इस समय खेल रहे हैं नाग, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वो विकेट पे बने हुए हैं। तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास से समय बना हुआ और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स मोटर्स नारवल के लिए साहिल आमिर, अरसलान यावर और योरलाक शेख आरफ के साथ आसिम बशीर की पहले गेंद आप स्टंप से बाहर लपेटा उसको ऑन साइड में। उस और खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से। 1 रन और 98, 8.1 के बाद 9 ओवर प्रगति पर गेंदबाजी आसिम बशीर के पास। 1 ओवर में 7 रन दिए हैं और दूसरा ओवर अपने कोटे का फेंकते हुए कुल मिलाकर पारी का 9 ओवर। अगली गेंद इस बार धीमी गति की गेंद, लेग स्टंप पर खूबसूरत स्ट्रोक नासिर बशीर के बल्ले से 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा और ये लगा जस्ट बौखारा छक्का। 100 रन पूरे होते हुए सैकड़ा पूरा फ्रेंड्स मोटर्स नारवल का 104, 1 विकेट के नुकसान पर 8.2 के बाद खान शफी राही आमिर के साथ रहता रजाक इरफान और खान शफी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी सेंड स्टार्स का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि डिजिटली आप हमें सम्मानित कर सकते। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक और विश्वसनीय तेज तरार शुरुआत फ्रेंड्स मोटर्स नारवल द्वारा। आसिम बशीर चले, एक बार फिर फ्लाइट की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को जगह से पिक किया और निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। दूसरा छक्का, लगातार 2 गेंदों से 2 छक्के। एक और जस्ट बौखारा छक्का आता है नासिर बशीर के बल्ले से। उनका व्यक्तिगत योग 7 गेंदों से 23 और कुल योग 110 रन 8.3 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। आबिद रसूल परा फिर दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं। खान शफी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। गुलजार कश्मीरी हमारे साथ बने हुए। वालेकुम अस्सलाम। आसिद पाठक बाहर अगली गेंद, हालांकि गेंद को उठा दिया, सीधे वहां पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और नासिर बशीर लगातार इस समय विस्फोटक बल्लेबाजी के चक्कर में इस बार 2 गेंदों से 2 छक्के लगने के बाद अगली गेंद को फिर उठाया। उस और खिलाड़ी थे, उन्होंने लपक लिया और दूसरे विकेट के रूप में नासिर बशीर 23 रन बनाकर 8 गेंदों से पवेलियन लौटते हुए दूसरा विकेट मिलता हुआ 8.4। नासिर बशीर आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए आसिम बशीर ने यह सफलता दिलाई। कहीं ना कहीं इस विकेट की आवश्यकता थी, अंततः उसको प्राप्त कर लिया आसिम बशीर ने। हिलाल रहतर हमारे साथ, मीर जावेद रेगुलर व्यूअर लगातार हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। फ्रेंड्स मोटर्स नारवल 110 पे दूसरा विकेट 8.4 के बाद नासिर बशीर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 23 रन बनाए उन्होंने 8 गेंदों से, लेकिन इश्तियाक रसूल नाबाद हालांकि पारी का प्रारंभ कर रहे थे आज इम्तियाज लेफ्टी के साथ। इम्तियाज लेफ्टी 14 और नासिर बशीर 23, ये 2 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और आसिम बशीर को एक सफलता मिल चुकी है। ऐसे में नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए 110 पे 2, 8.4 के बाद आबिद रसूल बहुत बहुत धन्यवाद और वसीम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और नए बल्लेबाज वसीम काचरू 128 मैच 123 इनिंग में 3862 रन 158 उनका सर्वाधिक स्कोर 36.43 एवरेज 149.40 उनका स्ट्राइक रेट 23 अर्धशतक और 4 शतक उनके खाते में। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आप बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वसीम काचरू विकेट कीपर बल्लेबाज और ऐसे में बीच मैदान में उनका आमंत्रण हो चुका है। तो यहां से एक आधारशिला सेट है उनके सामने और उस पे किस प्रकार से नींव आगे रखेंगे ये देखने वाली बात होगी। रात रजाक तारिक अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुहेल अहमद इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जहांगीर लोन्ना भी आने बाकी है। ऐसे में आसिम बशीर नए बल्लेबाज वसीम काचरू के लिए पहली गेंद, वसीम काचरू के लिए इस बार अच्छी गेंद, हालांकि गेंद की पिच तक पहुंचे, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद उसको निकाला। जब तक गेंद फील्ड होती पर्याप्त समय था 1 रन लेने का और केवल 1 रन से ही संतोष नाग को स्ट्राइक मिलती हुई 111 नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी और नासिर बशीर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नाग के लिए फ्लाइटेड गेंद आसिम बशीर की करारा स्ट्रोक खाली क्षेत्र में उस और खिलाड़ी आ रहे हैं। शानदार क्षेत्र रक्षण, निश्चित तौर पे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ नाग के और नाग का कुल योग 34 गेंदों से 70 112 फ्रेंड्स मोटर्स नारवल 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। मोहसिन मुश्ताक वालेकुम अस्सलाम। सेल तारिक और खान शफी मीर जावेद के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और प्लेइंग 11 की बात करें, इश्तियाक रसूल, इम्तियाज लेफ्टी, नासिर बशीर, वसीम काचरू और आने वाले बल्लेबाजों में जहांगीर लोन, जलील भट्ट, ओवैस बाबा, आदिल दादा, आदिल कोहली, जाहिर डार और बिलाल
जो ये प्लेइंग 11 है। और ऐसे में इन परिस्थितियों में क्या लाजवाब आकर्षक और हमारे स्कोरर्स को भी सारा श्रेय जाता है। हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन जहांगीर जॉन लगातार समय समय पे हर आंकड़े से हमें सूचित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर जॉन अपना प्यार और विचार देने के लिए। फिर दोस्त अहमद हमारे साथ। नए ओवर की शुरुआत मुनीर भट्ट, पारी का 10 ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और जगह बनाते उसको खेला था सीधे बिलाल पांड्या के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। डॉट गेंद के साथ शुरुआत 9.1 112 पे 2। मीर जावेद हमारे साथ लगातार इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और इस बार अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती को लेग साइड में मोड़ा। हालांकि स्क्वायर लेग अंपायर की बाईं ओर उस ओर खिलाड़ी है, उन्होंने फील्ड कर लिया, लेकिन चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए। एक रन और एक रन के साथ ही स्कोरबोर्ड 113 पे पहुंच चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 10वां ओवर प्रगति पर आधी पारी समाप्त होने को है, लेकिन स्कोरबोर्ड पे एक अच्छा खासा लक्ष्य अब तक बटोरने में सक्षम हुए हैं फ्रांस मोटर्स नारवल के बल्लेबाज। राजपूत किंग हमारे साथ बने हुए हैं। हांजुल प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 का फाइनल मुकाबला। इस बार लगे संपर, पैड पे लगे जोरदार अपील, लेकिन उत्साह ने ज्यादा, विश्वास में कम, नकारा वहां पर अंपायर ने। और निश्चित तौर पे कोई प्रभाव नहीं वहां पर। सुरक्षित क्रीज में वसीम काचरू, सोहेल अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल भाई। बबलू भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बट आशिक हमारे साथ बने हुए हैं और सोल हैकर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। अच्छी गेंद ऊपर जाकर के लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि हल्के हाथों के साथ एक रन पूरा किया वसीम काचरू ने, स्ट्राइक के नाक को मिलती हुई, और कुल योग 114 पे पहुंच चुका है 9.4 के बाद। वसीम काचरू 2 पे पहुंचे सबकते 2-3 गेंदों से, और इश्तियाक रसूल 71 पे नबाद 36 गेंदों से। और आज उनके पास से एक बार फिर पर्याप्त समय है कि आज शतक ये पारी खेलें, अपनी टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाएं। क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुनीर भट्ट हैं गेंदबाज, इश्तियाक रसूल होंगे सामने। ऑप्शन से बाहर किनारा, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, अपने आप को संतुलित करते गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद कट के अंदाज में उसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका, नाग के खाते में उनका व्यक्तिगत योग 75 पहुंच चुका है। और कुल योग टीम की अगर बात करें 118 फ्रांस मोटर्स नारवल का। जी हाँ बिल्कुल, जुबैर मुश्ताक का आज फ्राइडे है और ऐसे में नमाज का निःशुल्क समय होगा, और नमाज के समय जो है हम इस सीधे प्रसारण को रोकेंगे आवश्यक। ऐसे में नमाज के बाद जो बाकी पारी होगी वो शुरू होगी। अगली गेंद, इस पे कोई रन नहीं बना, ऑफ स्टंप पर हल्के शफल करके ऑफ स्टंप से बाहर, उसके बाद ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया था, सफलता मिली नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर पूरा, आती पारी समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति 118 पे 2, 75 37 गेंदों से इश्तियाक रसूल और वसीम काचरू 3 गेंदों से 2। Off his stage, 118 for 2. Tanner is done and dusted. Ishnag on to 75, 38 balls. And Wasim Kachru just walked in. He need to get his eyes in. Match summary so far 118 of Tanners at the cost of 2. Nag scoring vital 75. What a contribution. And Sohail Ahmed is watching from Patan with Raja Rashid. Thanks for your love. And is this Raja Rashid from your native area or from Gandarbal? And Arbaz is watching, then Rath Razak and others. Next ball, of the outside edge, will this carry down to the boundary? It goes quickly through the slip cordon and down to the third man boundary for 4. This just Bukhara takes the score to 122. And the final passage of Tanners begins here with the boundary. And Kachru fetching that boundary out of nowhere. Zafar Kamlak, the regular viewer, is alongside us. बिलाल पांड्या को परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। 122 for 2. Next ball, oh what a shot! Wasim Kachru and ball is travelling in the air and one bounce into the extra cover boundary for 4, and that 4 brought to by just Bukhara. 126 for 2. Arif Kataria, the owner of Sultan Warriors Baramulla, is watching with us. Thanks for your love and support. So is Butt Shaukat, the captain of Kashmir Knights, is the power supply broadcast. And we extend warm welcome to you buddies. Thank you for your love and thank you for backing us and our entire commentary team. And it's Adi, but Imran and Bilal is operating. Wasim Kachru right on top of him. Oh, what a shot again in that corridor of extra cover. With this run down to the boundary. Yes, it does. It's another just Bukhara into the extra cover. But look at the class, the sheer balance and the brilliance of this man, wicketkeeper batsman of Valley Cricket. He is a lovely cricketer, and that was a lovely touch shot into the extra cover, inside out, bit audacious to be precise. It's 130 for 2, 12 of 3 balls so far, 3 boundaries, hat-trick of 4 so far to Wasim Kachru, and Kachru is packing each and every ball to perfection. And this is a grafter
He is a wonderful prospect as a batter. Oh, look at that one. This is absolute beauty. And this is how you can make a serious comeback. And you can ask the questions to the batter Avantipura Times. Then we got Wasim Ahmed and Fazal Rahman and Butt Imran and others. Thank you. And Butt Imran says, take me in. Thanks, buddy. Next ball. Oh, that one comes down the track. This isn't good piece of cricket, to be precise. Hitting 3 consecutive balls to the boundary. Then playing a dot ball. You feeling the heat? Or next ball comes down the track. He shimmies down the track and dances down the track. Oh, that one fetches that one from outside off and into the square boundary for 4. And that 4 brought to be just to Bukhara 134 for the loss of 2 wickets after 10.5 balls. It is 11 done, 134 for 2. Avantipura Times, thanks for your love. Indra's Rather, it means quite a lot. Avantipura Times and Raza Makbul, then Indra's Rather and Tariq Ahmad and Tanveer and Indra's, thanks for your love to 134 for 2 after 11 hours. And now Kachru joins the party in style. He's on to 18 of 9 balls. 134 for the loss of 2 wickets. Thank you, Panun Jigar and Khurshid Khan. Walaikum salam. And Mir Faisal and then Khurshid Khan and Buckstar. Khurshid Khan, walaikum salam. And Soil Hawker. Next ball, it's a dot ball to start with the fresh show beginners with the dot ball. Mir Faisal, exactly. We are going to attend Friday press, don't worry. Next ball from Munir Bhatt. The leader of the side is bowling. Oh, in the air, chance. But the ball dropping short of the fielder there at mid-wicket area. The 2 batters scamper through for a quick single. Should have tried to put in that full-length dive. What could have been a big catch. It could have been a big wicket and much needed. Desperately need that wicket. Tantre Mudassir, Shabir Ahmad Lon, Babu Imran and then Tantre Mudassir and Indra's Ratha. Thank you. 135 for 2. Oh, goes for that scoop. Had improvisation. And with that single score moves on to 136 for the loss of 2 after 11.3 balls. Sheikh Qatar, exactly. We're going to attend, don't worry. Still we have 30 minutes at least. Tanveer Bhatt, Zubair Babu, Mir Faisal, Tarek and Butt Irfan. 136 for 2. Captain bowling to the big gun of Valley Cricket is on strike. Ishnag. In comes Munir Bhatt. Punches that one but straight down towards the long on. We'll get a single nonetheless. Each and every run is going to be important for Friends Motors Narwhal. They need to carry on with the same pace. But these 2 batters, these 2 are the grafters out there to the batting strip of Hanzul, because both love to go after the bowlers. And that one past the bowler, straight down the ground, straight hit. We'll get a single nonetheless. And each and every run will count. And these runs will ease up things for batting side. And the pressure which is on their heads, on their nerves today, and it will be released. If there is little amount of it, that will be released exactly. Oh, that one, little uppish. And down towards the sweeper of cover. Yet another run, another single. And now score moves on to 139 for 2. Quite over comes to an end. 1, 2, 3, 4, 5 singles up and over. And that marks the completion of over number 12. 12 done, it's 138 for 2. And we'll have to wait and watch. And I think it's going to be the prayer break. Yeah, of course, and it is 12 hours done, 4 extras, 139. And we shall be back in a while with the second innings. And we are going to attend the Friday press. And join us back for the fun, the excitement in a while. Assalamu alaikum.